हुआ तो फिर बाकी का आधा अगले लेक्चर में करेंगे. Let's read the question first. Let us understand the question, then we'll start solving it. Messrs Global Private Limited has 5 jobs, okay, A, B, C, D, and E. So here there are 5 jobs to be done by 5 employees: Vishesh, Dhruv, Nilanj, Aditya, and Shivam. These are the 5 employees who are going to complete these 5 jobs. Each employee is assigned one and only one job. The number of hours each employee would take to complete each job is given by the following table. Okay, so the table is giving information about the number of hours that each employee would take to complete the given jobs. Like for example, if you talk about Vishesh, if he is given job A, he is going to complete it in 28 hours. If the same person Vishesh was given job B, he would have completed that job in 27 hours. Now if you talk about job A, which is going to be completed in 28 hours by Vishesh, but if you give the same job to Dhruv, it could be completed in 26 hours as well, and so on. So the details of number of hours required by each employee for each job is given in this table. Find the assignment of jobs to employee in such a way that the total time taken to perform 5 jobs is minimum. So we don't have to just assign things. We have to assign in such a way that we are able to get the jobs done at minimum at fastest possible time, that is lowest possible time. So before starting with the problem, we always check for 2 basic conditions. One is the problem should have been a minimization type problem, and the other is the problem should be a balanced problem. So looking at the information, what do you all think? Is it a minimization type problem or not? Yes, right. It is a minimization type problem. How did we come to know it? We come to know that this is a minimization type problem based on the information given to us. We have to check. We have to look into the variables, what these variables stand for, what these variables represent. The variables over here, they are representing time in hours. So time, we always want it to complete it in minimum possible time. We always want our jobs to be completed as soon as possible within minimum possible time, and hence that makes this problem a minimization type problem. Okay, second condition, the problem should have been a balanced problem. What do you think? Is it a balanced problem or not? For that, you have to check whether the number of rows are equal to number of columns. So here, as you can see, there are 5 columns and 5 rows because there are 5 jobs and 5 employees. So obviously, this is a balanced problem, and hence it satisfies both of the basic condition, and we can now solve it further. So for solving it, what is the first step that we did in our previous sum also? The first step is row minimum. Okay, what we do in row minimum? Okay, 5 employees, 5 jobs. Row minimum, what we do? We go row wise. We will go into the first row. We will select the minimum value, that is 24, and what we'll do, we will subtract this 24 from all the other values. That is 28 minus 24, 4, 27 minus 24, 3, 24 minus 24, 0, 35 minus 24, 11, and 38 minus 24, 14. We will do this for all the other rows. In the second row, minimum value is 23. Subtract 23 from all the other values. 26 minus 23, 3, 1, 0, 9, 16. In the third row, minimum value is 18. So 0, 2, 4, 12, 14. In the fourth row, minimum value is 24. Subtract 24 from all the values. 3, 6, 1, 0, 3. In the fifth row, minimum value is 29. So 0,
2, 11, 11 and 7. So this is row minimum. After we're done with row minimum, what we do is column minimum. That is, we have to go column wise, look for minimum value in a particular column, subtract that minimum value from all the other values of that particular column. But now for that, you are going to use this reduced matrix and not the original matrix for column minimum. So for that, we'll mention over here step 2, column minimum. Okay, so we'll go column wise. Minimum value is 0. So when you all already know that when the minimum value is 0, the entire column will remain as it is, because when you subtract 0 from all the other values, it is not going to change any of the values. 4 minus 0 is 4, 3 minus 0 3, and so on. So we will write the same column as it is. Second column, minimum value is 1. Okay, so when you subtract 1 from all the values are going to change. 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, 1 5 1. In the third column, again minimum value is 0, so all the values are going to be the same. 4 1 11. The third also, again minimum value is 0, so you can write the same values again. In the fifth column, the minimum value is 3, so subtract 3 from all the values of that column. 14 minus 3 11, 13, 11, 0 and 4. That is it. So we are done with column minimum as well, and we've got another matrix over here. Now on the same matrix, we are going to do our third step, that is optimality test, where we draw lines. What are the rules for the lines? Only horizontal and vertical lines are allowed, no diagonal lines are allowed, and you have to draw minimum possible number of lines to cancel maximum possible number of zeros. Okay, so let us draw a line. Is there any possibility to cancel 3 zeros at once? No, there are no chances of cancelling 3 zeros at once. What maximum we can do is cancel 2 zeros in one at once. So if I cancel the very first column, I will be able to cancel at least 2 zeros. So the line is economical enough. I have not wasted the line. I have cancelled 2 zeros at a time, which was good. Then another chance where I can cancel 2 zeros at a time is by cancelling this third column as well over here. If I cancel this third column again, I can cancel 2 zeros at a time. Okay, so here also it was best for me to draw one line over here. Then in the third case, I can cancel this fourth row over here, because that also allows me to cancel 2 zeros at a time. So I drew this fourth line as well, third line as well. After that, there is one more zero over here. Okay, and I cannot leave any of the zeros uncancelled. So for this zero, I will have to draw one more line. And now here it is, I have a choice. Either I can draw a vertical line or I can draw a horizontal line. Does not matter. Does not make any difference. Okay. What is important is the zero should be cancelled and the line shouldn't have been wasted. And here we have not wasted the line because we cannot leave any zero uncancelled. So we had to draw a line to cancel the zero. Anyways, now all the zeros are cancelled. Now we have to count the number of lines. Well, 1, 2, 3, 4. We could draw 4 lines. How many lines did we require for an assignment problem? Well, it depends on the matrix order. Over here, the matrix order is 5 by 5, unlike the previous problem. In the previous problem, the matrix order was 4 by 4. So there, 4 lines were sufficient for us to get an optimum solution. But in this case over here, the matrix is a bit bigger. It is a 5 by 5 matrix, and hence we would require minimum 5 lines for a problem to become an optimum solution. But we could not get 5 lines, we could get only 4 lines. So m is not equal to n, therefore it is not an optimum solution. I hope you all are able to understand what I am trying to explain over here. So you don't have to ratify that 4 lines are, if you get 4 lines you get an optimum solution. No, it depends on the matrix order. If the order matrix order is 5 by 5, you will require 5 lines. If the matrix order is 4 by 4, you will require 4 lines. So as we know that if you are not able to get an optimum solution, you will have to reiterate, because we have to get an optimum solution. Unless and until we get an optimum solution, the problem is not going to get over. Okay. So what we do when we reiterate, we'll have to select a minimum value from the uncovered number over here. So the uncovered numbers are 11, 11. All these are uncovered number. From this uncovered number, you are supposed to select a minimum value, which is 9, I guess, over here. Okay. Now what we do with this 9? This 9 we are going to add at some
places and we are going to subtract at some places where we are going to add this 9, where two lines are intersecting each other. This 9 will be added over there, and where my mistake, the minimum value is 4 and not 9. I did not see this 4 over here, so you are going to add and subtract 4, not 9. Okay, so for this we are going to add to the places where there are the lines are intersecting. For example, over here you can see 1, 2 and 3. These 3 spots are there where the line is intersecting, 2 lines are intersecting. So there we are going to add this 4 from the other uncovered numbers like 11, 11, 9, 13, 12, 11, 11, 4. The 4 will be subtracted, and the cells where the single line is just passing, there the values will remain unchanged. You are not going to add, neither you are going to deduct. Okay, so doing this step, this will give us another matrix. So starting with the first column, well, here just a single line has passed, so the value will remain the same. So over here, first column 4, 3 will remain same, 0 will remain same. Over here, the 2 lines are intersecting, so here we will add 4 to the existing value. So 3 plus 4, 7. Here single line is passing, the value will remain the same. Coming to the second column, 2, 0, 1. Again here 2 lines are intersecting, so we will add 4 over here, so the value will become 9. Then single line passing, so remains the same. Third column, same value because single line is passing. Here we will add 4, so it becomes 5. Previously it was 1, and then single line is passing, so 11. Here no line is passing, they are uncovered, so we will subtract 4 from there. So 11 minus 4, 7, 9 minus 4, 5, 12 minus 4, 8. Here again single line is passing, the value will remain same. Uncovered number, so value will change. Minus 13 minus 4, 9, 11 minus 4, 7. Single line is passing, value will remain same. 4 minus 4, 0. Okay, so now we have got a completely new matrix where we can again try optimality test by drawing lines, okay, following the same rules. So let us see if we can cancel 3 zeros at a time. If there is any possibility, then we will have to first cancel those 3 zeros, but does not look like there are any cases where we can cancel 3 zeros at a time. However, what best we can do is we can cancel 2 zeros at a time. If I cancel the very first column, I will be able to cancel 2 zeros. So I have cancelled 2 zeros by cancelling the first column. So I drew one line and I cancelled 2 zeros. After that, if I cancel the third column also, I will again be able to cancel 2 zeros. So I cancel this over here. Okay. After that, okay, see, you can see that I have a choice. If I cancel this row, again I can cancel 2 zeros, or I can also go this way. If I cancel this column, I can still cancel 2 zeros. So either of the ways are correct. कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना के इस तरीके से 2 जीरो कैंसिल कर रहा है तो उसका भी प्रॉब्लम, उसका भी सोल्यूशन सही ही है. और किसी ने वर्टिकल लाइन बना के 2 जीरो कैंसिल करे तो उसका भी सोल्यूशन सही ही माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों ने रूल तो फॉलो किया ही है. एक ही लाइन ड्रॉ किया और 2 जीरोस कैंसिल किए. व्हाट मैक्सिमम ही कुड हैव डन, ही हैड डन. सो द प्रॉब्लम वुड बी करेक्ट ओनली. सो अब हम लोग यहाँ पर ये रो को कैंसिल करके इन 2 जीरोस को भी कैंसिल कर देते हैं. अब देख सकते, अब इसके बाद आप देखेंगे तो 2 और जीरोस बचे, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. और दोनों जीरोस को कैंसिल तो करना है, किसी भी जीरोस को हम अनकैंसल्ड छोड़ नहीं सकते. बट दोनों जीरोस अलग अलग जगह पे, ऐसी जगह पे कि एक लाइन से वो कैंसिल नहीं होने वाले, तो दोनों के लिए एक एक लाइन बनाने पड़ेंगे हम लोगों को. तो हम लोग बना लेंगे. आप वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं इसको कैंसिल करने के लिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं. जैसा आप बनाना आप वैसा बना सकते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू कैंसिल द जीरोस. सेम इज द केस विद दिस जीरो ऑल्सो. यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि एनीवेज एक लाइन से एक ही जीरो कैंसिल होने वाला था, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन्स को
काउंट करेंगे, वी रिक्वायर्ड 5 लाइन्स बिकॉज मैट्रिक्स ऑर्डर इज 5। अगर हमको 5 लाइन्स मिल गई है तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यस वी हैव गॉट 5 लाइन्स विच वी वांटेड, सो दिस इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन बिकॉज m इज इक्वल टू m। ठीक है, जैसे हम लोगों को ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी को रीराइट करते हैं, इस ऑप्टिमम सॉल्यूशन को रीराइट करेंगे हम लोग, और इसमें असाइनमेंट करेंगे, उसके बाद उसको टैबुलेट करेंगे। तो मैं इसी वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे वापस से लिख लेता हूँ, सो दैट वी कैन पुट असाइनमेंट ओवर देयर। ओके, सो मैं वापस लिख लेता हूँ 4 3 0 7 0 2 0 1 9 1 0 0 4 5 11 7 5 8 0 7 7 9 7 0 0। ठीक है, ये हमने इसी वाले को मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लिया, क्योंकि हमको पता चल गया कि ऑप्टिमम है, तो हमको खाली इसमें असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के लिए रूल क्या है, यू हैव टू लुक फॉर यूनिक जीरो फर्स्ट, रो वाइज आपको यूनिक जीरो देखना है। अगर आपका काम उस चीज से हो गया तो बात वहीं पे खत्म। अगर आप रो वाइज यूनिक जीरो नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर आप कॉलम वाइज यूनिक जीरो देख सकते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो में देखते हैं। तो फर्स्ट रो में हमको यूनिक जीरो दिख रहा है यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पर इसको असाइन कर देंगे। और जैसा कि मैंने समझाया था कि इसी के कॉलम में कोई और जीरो होगा तो उसको हम लोग तुरंत कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे रो में आते हैं। दूसरे रो में देख सकते हैं पहले 2 जीरो हुआ करते थे बट एक कैंसिल हो गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचे हुए नंबर्स में से ये जीरो यूनिक हो जाता है, तो इसको हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है, इसके लाइन में कोई और जीरो होगा तो उसको कैंसिल कर दे रहे, बट है नहीं। तीसरे रो में आ जाते हैं। तीसरे रो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जीरो अकेला है, यूनिक है, तो इसको हम लोग इजीली असाइन कर सकते हैं। इसकी लाइन में कोई और जीरो होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। फिर चौथे वाले रो में आते हैं। तो जैसा कि एक जने ने डाउट पूछा था कि सर अगर 2 जीरो होगा तो क्या होगा, तो देख सकते हैं अब यहाँ पर 2 जीरोज है, और हम तो असाइनमेंट वहीं पर करते हैं जहाँ पर हमको जीरो अकेला मिलता है, यूनिक मिलता है। तो इसलिए हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पर असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी फॉर द टाइम बिंग इस वाले रो को स्किप करके अगले वाले रो में चले जाएंगे। अगले रो में देखेंगे तो पहले 2 जीरोज थे, लेकिन एक कैंसिल होने के बाद ये यूनिक हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर इजीली असाइनमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि बताया कि इसके लाइन में कोई और जीरो का तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये वाला जीरो हो जाएगा कैंसिल। और उसके इसके कैंसिल होने के बाद ये फिफ्थ रो में जो हमने स्किप करा था, क्योंकि वहां पर हम लोग को यूनिक जीरो नहीं मिल पा रहा था, अब वहां पर ये वाला जीरो यूनिक हो गया इसके कैंसिल होने के बाद, तो अब हम यहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हैं। तो हमने वहां पे जाके असाइनमेंट कर दिया, तो हमारे असाइनमेंट हो गए पूरे। हमको हमारा प्रॉब्लम सही है कि नहीं ये देखने के लिए हमको देखना है कि मैट्रिक्स ऑर्डर और असाइनमेंट दोनों सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स है 5/5, यानी कि असाइनमेंट भी 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 असाइनमेंट आपको मिले, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, यानी कि आपने सब सही सॉल्व किया है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप इस तरीके से इसको चार्ट दे देंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, तो उसको तो समझ में आएगा नहीं, तो आपको उसको एक टेबल बना के उसको देना पड़ेगा, टैबुलेटेड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए। तो उसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे देते हैं। तो क्या करेंगे, 3 कॉलम बना देंगे एज ऑलवेज। पहला कॉलम बना देंगे वर्कर का, दूसरा कॉलम बना देंगे जॉब का, और तीसरा कॉलम बना देंगे आवर्स का, दैट इज टाइम टेकन। वर्कर्स में विशेष, ध्रुव, नीलंज, आदित्य एंड शिवम। अब किसको कौन सा जॉब असाइन है वो लिख लेते हैं पहले। ये जॉब्स के कॉलम थे ABCDE, है ना। तो ये जो है पहला जो है VDN एंड S, तो V को क्या मिला है, C मिला है, तो C लिख लेते हैं। D को क्या मिला है, B, तो उसको यहाँ पे B लिख देते हैं। N को A मिला है, तो A को क्या मिला है, D, तो A को D असाइन हुआ, D लिख लेते हैं। S को कौन सा वाला जॉब असाइन हुआ, E, यहाँ पे E लिख देते हैं। अब कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा वो पता चल गया। वो बंदा उस काम करने के लिए कितना टाइम लेने वाला है वो हमको यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स से मिल जाएगा। ओके, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स पे थोड़ा फोकस करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितना टाइम हमको कंसिडर करना है। तो अब
वी जो है अगर वो सी करता है, यानी कि विशेष जो है जॉब सी करेगा तो 24 आवर्स लेगा। ध्रुव को हमने जॉब बी असाइन किया है जिसके लिए भी वो 24 आवर्स लेगा। नीलंज को हमने जॉब ए असाइन किया है जो वो 18 आवर्स में कंप्लीट करेगा। आदित्य को हमने जॉब डी असाइन किया है जो कि 24 आवर्स में होगा। और शिवम को हमने जॉब ई असाइन किया है जो कि 36 आवर्स में होगा। टोटल आवर्स अब हम लोग लिख लेते हैं, जो कि है, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 126 आवर्स। ठीक है, मतलब अब आप कोई भी और कॉम्बिनेशन अगर आप देख के ट्राई करके देख लेंगे, आप ये सारे पांचों काम 126 आवर्स से कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। 126 आवर्स इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम दैट कैन बी टेकन बाय आवर 5 एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द 5 जॉब्स। और हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है पूरा।